हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं, उसकी टर्म्स क्या हैं, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और हम इसके हर एक कंसेप्ट को आज कवर करेंगे, तो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर कोई क्वेश्चंस तो डाउट्स होंगे तो आई होप आपको इस वीडियो में उनके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं या हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वीडियो डेली अपने फ़ोन सेट पे मिलती रहे। सो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। वी विल लर्न अबाउट सेल एंड बैटरी, उसका डिफरेंस। देन द हीटिंग इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्यूज, एमसीबी एंड शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। देन वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूज, द इलेक्ट्रिक बेल एंड इट्स वर्किंग। चलिए इतना सब आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब आप कोई सर्किट है, एक जगह स्विच है, एक जगह बल्ब है एंड इट्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, देयर इज द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज वायर, cable, it is electric current, that flow of electricity. To obtain electricity from cell, we have to connect it to a circuit. Cell connected to switch and bulb through wire. Wire holds the flow of electricity, that is the flow of electric current. Okay, then electric circuit क्या हुआ, a continuous conducting path, मतलब एक लगातार चल रहा है, वो कहीं रुका नहीं, continuous conducting path, conducting यानी allowing the electric current to flow, consisting of wire, wire, switch, bulb and cell, between two terminal of the cell or a battery. This is the source of electric current. When it is connected with wire to switch and light bulb like this, and these both are interconnected, then this is a complete circuit. ये पूरा एक सर्किट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे कहा कि the continuous conducting path between two terminals of a cell or battery where electric current flows is the electric circuit. समझ आया। अब हम जब आपने ये जो देखा यहाँ पे पूरे सिंबल के बिना, ये पूरा बेकायदा ड्रॉन था, बट मैनी टाइम्स ड्रॉ करना उतना इजी नहीं होता, सो वी यूज सम सिंबल्स। दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज। कनेक्टिंग वायर के लिए सिंपल लाइन, स्विच ऑन एंड ऑफ की पोजीशन के लिए ऑफ की पोजीशन इज शोन लाइक दिस ब्रेक, एंड ऑन इट इज कनेक्टेड। बल्ब, यह है इसका सिंबल। Cell we have this longer line vertical than a smaller, 1 and 2. Smaller is negative, the longer one is positive terminal. बैटरी, तो फिर वैसे ही सेल को 3 या 4 जितने भी सेल की आपकी बैटरी है उसको आप इंटरकनेक्ट कर दो, 2 or more than 2. Okay, like this, positive negative and so on. Clear? Electric circuit. When a bulb glows in an electric circuit, the switch is closed here. Open circuit, closed circuit की बात है। When the bulb glows, मतलब जो बल्ब लगाएगा वो ग्लो कर रहा है, तो यानी सर्किट कंप्लीट है, that is it is closed. And when it is not glowing, then it is circuit is off, it is open, it is broken. Okay, clear? समझ आया। नाउ सेल, आखिरकार सेल होता क्या है, द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वी यूज सेल्स इन नंबर ऑफ डिवाइसेस लाइक टॉर्च, क्लॉक, वॉचेस, टॉयज एंड सो मच मोर। बैटरी, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। कई बार आपने अपने डिवाइस में देखा होगा, सपोज इन योर क्लॉक ओनली it has place for 2 batteries, 2 cells, that is it. Now it is made of a battery. 2 cells वहां लगाई तो बैटरी हो गई, सिंगल लगती तो सेल। 2 cells
यानी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर, ऐसे ज्वाइन हो गया ये ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर. Example in the torches, clocks, so much more, radio, these are the placed over one another, after one another, then that is the battery. Clear a difference cell और battery का. कनेक्शन कैसे होता है किसी सर्किट का that regulates कि ये ऑन है या ऑफ है? Switch or key in the circuit placed anywhere in the circuit makes the regulation of the flow of the electricity. The circuit is complete. It is said to be closed or switch is on. When the circuit is incomplete or broken, it is said the circuit is open and it is off. Clear? अब सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं. उसके थ्रू हमें हीट भी जनरेट होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट किसी डिवाइस, कोई डिवाइस उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हीट प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, सपोज आपका बल्ब, इट इज प्रोड्यूसिंग लाइट बट ऑल्सो वो हीट अप भी हो रहा है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है बट इट इज अ वेरी लिटिल अमाउंट. कुछ डिवाइसेस होते हैं दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, दैट इज द यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Example, heater, bulb, room heaters, ovens, iron, etc. So इसका application क्या कह सकते हैं? For the production of light, heating effect of current is utilized by electric bulb. जैसा हमने बताया, electric bulb से heat produce होता है. Different heating appliances like water heater, electric room heater, iron, these are also using the heating effect of the electric current. एंड ऑल्सो द फ्यूज़. तो अब बात करते हैं फ्यूज़ क्यों यूज़ होता है? बिकॉज कभी कभी हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिलती है, इट स्टार्ट इज ओवरलोडिंग. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सोर्स, देन दैट ड्रॉज द एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ द करेंट. टू रेगुलेट इट, अगर ऐसा एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट यूज होगा without any regulation, then that might affect you और electric supply को भी affect करेगा and that might disrupt it. Like one insulated wire, there are three insulated wires, one is live, another is neutral and the last one is earthing. When it is not working properly, if in any case the plastic insulation, by heating up, the plastic insulation of live wire or neutral wire gets torn, it might touch each other and cause a short circuit. तो वैसी short circuit को prevent करने के लिए we use fuse. Fuse क्या है? It is a safety device that prevent any damage to the circuit. How it prevents? The wire have a low melting point that are used in the fuse. वो हमारे वायर्स को कैसे कनेक्ट किया? वायर्स को इस टाइप के वायर से कनेक्ट किया फ्यूज में, जो कि बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि जरी सी भी ओवरलोडिंग होते ही दैट विल ब्रेक. मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लीड एंड एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक. एंड दिस ब्रेक्स द सर्किट. समझ आए इस फ्यूज की वर्किंग कैसे हुआ? जब एक्सेसिव करंट विल फ्लो इन द सर्किट, एज सुन एज इट रीचेस टू द फ्यूज, और वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट आते ही दैट विल ब्रेक एंड वायर विल ब्रेक, तो सर्किट विल ब्रेक. तो इट्स जस्ट स्टॉप एंड प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट. फर्स्टली देयर वर द यूज ऑफ फ्यूज. देयर वर टू टेकिंग टाइम, लाइक once they are melt we have to replace with the new wire and all. So there is a replacement, there is a alternative for that, that is MCB, miniature circuit breakers. It is an alternative to fuse. ये fuse की जगह हम लोग use करते हैं. Why? Because it is automatic. It just automatically turn off. It does not break. We do not have to again ask our electrician to come and do the things. It just automatically turn off and you have to turn on when you regulate your electric supply. अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की.
वायर का भी हमने हीटिंग इफेक्ट जाना इलेक्ट्रिक करंट का, अब इसके मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, देन द करंट कैरिंग द बिहेव लाइक अ मैग्नेट. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. क्या समझे कि अगर एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, देन दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज सम प्रॉपर्टीज दैट वायर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. So it was discovered by scientist Hans Christian Ørsted. When an electric current is passed in wire, then the compass needle along placed near gets deflected. Because why? Because of the presence of magnetic effect of the electric current. इसी के थ्रू इन्होंने जाना था that there is a magnetic effect present in the electricity. How we can just increase it? We can increase this effect by just coiling the wire around a wire, or more increasing by just coiling it around an iron rod. एक आयरन रॉड या आयरन पीस लेकर के अपना इलेक्ट्रिक वायर आप उस पर coil कर दो. So it will just increase the magnetic effect of that electric current. Okay, so that's how we got the electromagnet. क्या है आप इस डायग्राम में देख सकते हो. This is the battery, the source. Then there is a wire that is having the flow of electricity and it is connected. It is coiled on the iron nail. Iron piece पे coil भी किया हुआ है. So this system, this product that we are having here, this is the electromagnet, the simple electromagnet. कैसे बना? एक आयरन नेल ली, वायर लिया, कनेक्ट किया, उसको coil किया उस पे और कनेक्ट किया बैटरी से. So it is a electromagnet. समझ आए? The consisting of coil insulated copper wire wrapped around the iron rod and connected to the battery or a cell, and then the current is passing through it. This produces the magnetic effect on the electromagnet. When the magnetic effect magnetizes the iron rod, this way iron rod become an electromagnet. और ये क्या है? ये तभी तक वर्क करेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होगी. It will remain an electromagnet as long as the electricity flows through the coil. If it is switched off, the magnetism will also disappear. It will no longer behave like a magnet. इसके factors क्या हैं? By increasing the amount of current used in the coil, we can increase the electromagnetic effect. By increasing the number of turns of the wire on the coil, we can increase the electromagnetic effect. Clear? Now इसके uses, these are used in various things like electric bulb, electric fan, electric motor. These magnets have their utilization in electric generators, then in the picture tube of TV. The magnetism separation of iron ore from the earthy substances, electromagnets are used. Clear? हमें कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करने को मिलते हैं. परमानेंट मैग्नेट से भी हमें बेहतर कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी, बिकॉज इनकी मैग्नेटिज्म कुछ ही समय के लिए होगी डिपेंडिंग ऑन द करंट फ्लोइंग. मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्विच कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ जब ज़रूरत हो. व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट में ऐसे स्विच ऑन एंड ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल. By increasing the number of turns on the coil, we increase the magnetic effect, which is that we cannot hold permanent magnet. We cannot just regulate the power. Okay. So ये दो तरीके से electromagnets are better than the permanent magnets. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की. एक ऐसा यूज जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं. कैसे करते हैं आप यहाँ पे इनके डायग्राम में देखो. दिस इज हाउ इट इज डन. दिस इज द बैटरी, द सोर्स, देन द वायर इज कनेक्टेड टू स्विच एंड हियर टू द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर that is then connected to the hammer, and on this side it is again connected to the electromagnet. Then that electromagnet is connected to the hammer, and then here is the bell, which when hammer just hit it, it just make the sound. Here it is a switch, which is the person will
as soon as it touches, it pushes, it just make the system work. It just make the electricity run through all over it. Okay, it is a आपका यहाँ पे जो मैग्नेट यूज किया जा रहा है in the electric bell, it is a U-shaped magnet. Okay, then you can see the soft iron here that is connected to the pole of electromagnet, and then the lower is connected to the hammer. The lower end of iron bar is attached to a flat spring. The flat spring is then fixed to a metal bracket here. Okay, the upper end of the iron bar has the clapper attached to it. The metal gong is fixed near the clapper. Clear? So how is working? When we press the switch, see, when we press the switch, the electric current flows through the circuit. Then as soon as it flows, electromagnet gets magnetized, and that attracts the iron armature. Armature here, this iron tip gets attracted towards the electromagnet as soon as it gets magnetized, and it's moved close towards the pole of the electromagnet. The clapper here, this hammer attached to it, strikes the gong and produces the ringing sound. It shows like that bell is ringing. समझ आया कि कैसे इलेक्ट्रिक बेल वर्क की, कैसे सारी चीज़ें थी, what were the things, what was the electromagnet and everything. I hope आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे. अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो.